Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home, right? So today we are going to do chapter number 2 in Litho. In that some exercises are remaining. These are very easy. But let's solve today. See here what is given. It is ascending order. You know it very well. What we have to do in ascending order? Ascending order means which order? How to arrange the number? Ascending order means numbers smallest to biggest, right? We have to find out the smallest number and then we will write big numbers like this. Understand? So we can write here smallest to biggest. What? Smallest to biggest, right? It is only I am writing, no need to write in your litho. ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. It is only for explanation. Ascending order means smallest to biggest. Again, let's say it one time. Ascending order. See, you have to learn this spelling also, right? Some children don't know how to read this spelling. इसको कैसे बोलना है? So this is ascending order. Which order? Ascending order. Ascending order means smallest to biggest. In this order you have to arrange the numbers, right? इसमें आपको 2 से ज्यादा numbers दिए जाएंगे तो उसको आपको perfectly small to big वैसे arrange करना है, right? Now see the first one. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि if you want to find small number or big number, first of all see the first place. पहले आप उसकी ये जो बिग वाली प्लेस है ना वो देखो, मीन्स के 100 प्लेस देखो. इफ 100 प्लेस आर सेम देन सी 10th प्लेस एंड इफ अगेन 10th प्लेसेस आर सेम तो 1st प्लेसेस देखेंगे, राइट? नाउ सी हियर हमको इसमें कौन सा नंबर सबसे पहले फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? वी आर गोइंग टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर. सो लेट्स सी हियर 6 8 7 and 3. Okay, now tell me which is the smallest one? 3. So this number we'll write over here. So write 378 and cut 378. Now it is over, right? ये इसको अभी हमको ध्यान में ही नहीं लेना है because this is the smallest one. So we have written. So cut. See, it is very important. अगर आप ascending order या descending order मैं आपको बाद में समझाऊंगी, but in ascending order you are writing the numbers. So you first of all write and then cut. पहले आप लिख लो उसके बाद cut करो. Understand? Now see how many numbers are left with us? Only 4 numbers. Now find again small number from these 4 numbers. So 7 8 6 6. Okay. So 6 is the smallest one, but there is a problem. यहाँ पे तो problem है. What? These 2 are 6. Same. तो मैंने बोला ना 100 places same. So we cannot decide which is small and which is big. So what we have to do? See 10th place. उसकी next place देखो. इसमें 8 है और इसमें 7 है. Now we can find 8 is small or 7 is small. 7, right? So our next number is this only. So which number is this? 673. Write this number and then cut. Now see, again this number is small one. So we have to write this number 687. Which number is this? 687 and cut this number. Okay, now only 2 numbers are left. Let's see the 100 places first of all. 7 and 8. So which number is small? 7 or 8? Obviously 7, right? So which number is this? 738. So let's write this number 738 and after that cut. Now how many numbers are left with us? Only one number. So we will write here 873. Easy. It is really very easy. Now which order is this? Ascending order. In ascending order which number come first? Small number. And while finding the number, which place we have to see first of all? 100 place, right? So let's see 100 place. पहले हम 100 place में ऐसे underline करेंगे. 6 2 6 4 4. See 4 4 6 6 are same. और सबसे small कौन आ गया यहाँ पे? 2. So first of all we will write this number only 260.
ओके, वी हैव रिटन, नाउ कट। अब इसको हमको इसका कुछ भी काम नहीं है, वो तो 260 तो चला गया, राइट। अब हमारे पास 6 6 एंड 4 4। अब 6 और 4 उन दोनों में से कौन स्मॉल होता है? 4। ओके, लेट्स सी 4 4। अब 4 4 तो सेम है, सो वी कैन नॉट डिसाइड विच इज स्मॉल एंड विच इज बिग। तो हम टेंस प्लेस के पास जाएंगे। सो 0 and 0, oh my god, this tens place are also same. Now we have to move to the next place. This is ones place. 0 and 6. अब इन दोनों में से कौन छोटा है? 0 और 6? Obviously 0. So which number will come? 400. And let's cut it. Now this number we have to write 406. And we have cut this number. Now how many numbers are left with us? 2 numbers are left. So 6 6 are same. So we will move to the next place. This is tens place. 2 and 0. So which is the bigger number? 0 or 2? Obviously this 2. So 600. Sorry, which number is smallest? We are finding small number, no? So 0. 0 is small number. So we will write 602. And let's cut this number. And which number is left at last? 620. So let's write 620 over. Easy. Quickly you can do this. Only see first big number 100 place, right? पहले 100 place देखो. If 100 place is same, तो tens place देखो. If the tens places are same, see ones places. Okay. And if ones places are also same, so this number is equal. But ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, right? दो numbers ये ऑर्डर में तो कभी नहीं होगा. Now see 7 9 8 6 5. Okay, which is the smallest one? 5. So 599. Okay, it is cut. Now 7 9 8 6. Which is the smallest? 6 1. So the number is 689. Cut. Now see here 7 9 8. So from these three numbers, which is the smallest one? 7. So 743 and cut. Now see 8 and 9. Which is the smallest one? See ये तो बहुत fun है ना, हमको only small numbers ही ढूंढना है, but order in ascending order. Understand? 9 and 8. So 816 and only one number is left. This is 918. Right? So it is very easy, but when you write at that time you cut the numbers also. Understand? Now let's see the next question. Now let's see the heading. See what is written. Write the numbers in descending order. See what is this? Descending order. हमने आगे क्या पढ़ा? Ascending and this is descending. So you have to take care. Both these spellings are same, right? थोड़े हमको same लग रहा है ascending and descending. तो उसमें आपको confusion होता है, right? हम टेस्ट में भी confuse होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको अच्छे से याद रखेंगे, right? Now in descending order, biggest to smallest, right? Descending means big to small, ascending means small to big. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देती हूँ, B to S मतलब कि big to small, right? In short form we can say that. Now see, ascending order में हमने क्या किया था? Small numbers, and here we will find big numbers. Understand? So let's see here. But here also method is same. We will see this 100 places, and after that we will decide which is big one. Okay, so here 5 5 4 4 and 5. So 5 5 5 are same. From 4 and 5, which is big number? 5. तो हमको ये 5 वाले नंबर्स ही देखने हैं. 5 5 5. अब हम जो 5 वाले नंबर्स है ना, उसकी टेंस प्लेस देखते हैं, क्योंकि सब में तो सेम ही आ रहा है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बिग है और कौन सा स्मॉल? तो इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 0 है. तो 0 4 and 1, which is big one? 4 1. So this number we will write. Which number is this? 541. Understand? Let's cut this number. अब 5 वाले दो नंबर बच गए, तो हम इस दोनों नंबर में से वापस बिग नंबर ढूंढे. सी 0 and 1. So 0 is big or 1
1. So here we will write 514. Understand? Here 514. So let's cut this number. And which number is left with 5? 500. So here we will write 500 and here cut. Okay. Now these numbers are left 4, 4. Again same. So we cannot decide. Now see the tens place, 5 and 1. So 5 is bigger or 1 is bigger? 5 is bigger. So this number we are going to write. Which number is this? 451. 451. Cut, and which number is left? Only 415. So that we have to write 415 at last. Easy. Here in descending big number we have to find, in ascending small number. This is descending, that's why we are finding big numbers. Okay. Now see the first number, 6, 3, 7, 9, 8. Obviously 9 is bigger. So this number is 924, right? And cut. After that, see 6, 3, 7 and 8. So 8 is bigger. So which number is this? 869. And let's cut it. Now see here 6, 3 and 7. So which number is bigger number? 722. So that we have to write 722. Now cut. Now again find big number 6. So this is 628 and cut. Number is only 350. So here 350. It is very easy, right? अगर आपको एक बार समझ में आ गया, so you can do it in 1 second. एक second में हो जाएगा, right? अब देखो, again we will find which order is this? Descending order. In descending order, which number will come first? Big number. Descending order में कौन सा numbers हम पहले ढूंढेंगे? Big number, right? तो पहले हम इसकी 100 प्लेस देखेंगे. 100 प्लेस में जो नंबर बिग है वही लेंगे. 4, 2, 9. ओके, ये 9 बिग है, 1 स्मॉल और ये 9. ओके, यहाँ पे तो दो 9 वाले आ गए. तो हम कौन सी प्लेस देखेंगे? 10th प्लेस. सी हियर 1 and 0. नाउ कंपेयर 0 and 1. 0 is big or 9 is big? Sorry, 0 is big or 1 is big? 1. So it is 910, right? Cut it, and now it is only bigger one. So we will write this 901. And here also cut. Only 3 numbers are left. So 1, 2, 4. Which is big one? 428. So I am writing here 428. Write the number and cut the number. Right. Now see here 1 and 2. Which is big one? 284. So again, first we have to write the number and then we have to cut. Okay, now only one number is left. This is 190. So we have to write, and after that we have to cut the number. Easy? It is very easy, right? And see here, counting. Here you are going to count, and it is easiest for you. Here what is given? Rupees, right? Money is given. So 100 rupees note, 100 rupees note. Here 10 rupees. मीन्स 100 रुपीज की कितनी नोट्स दी है? 2 नोट्स. तो कितना हो जाएगा? 200 and 10 tens 4. So 1 time 10, 2 time 10, 3 times 10 and 4 times 10. 4 times 10 will be 40. तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. इसको क्या क्या बोलेंगे हम? It is 240. So we can say 240 rupees. Okay. Now see here some matchsticks are given. How many matchsticks are there? 100, 200, 300. So we have to write here 300. And how many tens? Only 1 10. Only 1 10. And how many ones? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is 9. So which number is 3? 3, 1 and 9. See how to write? 319 means 319. Understand? This number is 319. समझ में आ रहा है आपको? 10 and 9, 19. So 319. Easy. Now see here. 100 given, 10 plus given, and 1 is also given. So how many? 100, 1 time 100 and 2 time 100. That's why 200. अब 10 वाले कितने दिए? Only 1 time. So we can write 1 time 10. And once मतलब कि सिंगल कितने दिए? 1.
सो 10 and 1 11, तो हम क्या लिखेंगे 211. अंडरस्टैंड? 211 blocks are here. Easy. Now see here the last one. It is beads, right? एक string है, उसमें beads है, मोती है. तो how many 100? Only 100, right? और how many 10 10? 1 time 10, 2 times and 3 times. So we can write 3 times 10 means 30. And single, let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is 138. How to speak 138? So we can write the number 138. Easy. Now let's see the next one. Now see here again money rupees are given. See 110. It is places wise, right? ये प्लेस वाइज है, तो हम प्लेसेस कितनी होती है ऐसे 1s 10s and 100 ऐसे होती है, इसीलिए यहाँ पे 100 100 है, यहाँ पे 10 10 है, बट वंस तो कुछ दिया ही नहीं है. सो लेट्स सी 1 time 2 time and 3 times. So we can write 300. Okay, and 10 10 how many? 20. So we can write 20. So the number is 320. Understand how many rupees we can say? 320 rupees. Now see very carefully. Here bundles of matchsticks are given. See 100 100 given. 10 bundle of 10 is not given. See carefully. 10 का बंडल तो दिया ही नहीं है, समझ में आ रहा है? और सिंगल के हमको 3 दिए हुए, 1 2 3 4. So we can say 400 and टेंस में तो कुछ हमको दिया ही नहीं है, so we can write 0 0. और यहाँ पे कितना दिया है 3. So 403. So 100 प्लेस में 4 दिया है, टेंस प्लेस में कुछ भी नहीं दिया है, और वंस प्लेस में 3. तो दिस इज 403. नाउ सी सेवेंथ वन में क्या है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है. देखो 100 प्लेस है, टेंस प्लेस भी है और वंस भी है, मतलब कि यहाँ पे सब है, कोई भी जीरो नहीं आएगा बीच में. देखो कितना है 1 time 2 time 3 time 4 time and 5 times. 5 times 100 means 500. 5 times 100 means 500. 10 10 how many? Only 1 time 10, that means 10. And how many are single? See 1 2 3 4 and 5 means 10 and 5 15. 515. How to say 515, right? See 500 10 plus 5, तो 10 and 5 तो 15 हो जाता है. So we will say 515. और अगर आप another method से करना चाहो तो हम ऐसा करते वंस टेंस 100, राइट? जब तीनों दिया हुआ है तब. इसमें ऐसा पॉसिबल था कि कैसे, पहले हम वंस प्लस दिखे तो 3, टेंस प्लस में तो कुछ भी नहीं है तो 0, और 100 कितने हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया. सेम वे सी पहले हम वंस देखे 5, टेंस देखे 1 ही है तो हम 1 लिखेंगे, और 100 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम कितना लिखेंगे 5. तो हो गया 515, राइट? सो इट इज वेरी इजी. यू हैव टू सॉल्व दिस. ये आपको हमने आज जितनी भी एक्सरसाइज की है वो सॉल्व करनी है. और यहाँ पे आप कुछ एक टेबल देख सकते हो, राइट? उसमें क्या करना है, कलर द नंबर गिवन इन द टेबल एज पर इंस्ट्रक्शन. अब इस टेबल में क्या करना है, ये डोजिंग है. जैसे कि मैं कोई नंबर बोलूंगी, इसमें मैं बोलूंगी और आपको साथ साथ में करते जाना है, राइट? तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. उसके बाद मैं जो नंबर बोलूँ उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ मैं कलर भी बोलूंगी. तो ये आप जब स्कूल में आओ ना तब हम करेंगे, राइट? अभी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर में मैडम क्या बोल रहे हैं. तो इसमें हम आप स्कूल में आओगे तब मैं नंबर बोलूंगी और आपको ऑन द स्पॉट उस नंबर पे वो कलर करना है. जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि डू रेड कलर इन 445, तो आपको क्या करना है 445 ढूंढना है यहाँ पे और उसमें रेड कलर करना है, राइट? इट इज एन एग्जाम्पल. फिर मैं बोलूंगी कि डू येलो कलर इन 200, तो आप क्या करोगे 200 को फाइंड करोगे, फिर आप 200 में येलो कलर करेंगे. तो ये हम स्कूल में होगे तभी हो सकता है, राइट? तो ये हम खाली रख रहे हैं. बाकी आज हमने जितना भी किया वो आप लिखतों में कर लेना. अंडरस्टैंड?